Good morning, sir. Yes, good morning. Yes, have you completed the laboratory part? Titration, NEP? अ, सर अभी तो मैंने मतलब जनरल जीके किया है और जो टॉपिक आपने बोला था कोऑर्डिनेशन वो किया है मतलब एनईपी थोड़ा बहुत किया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। Yes, first of all, basic introduce yourself. ओके सर। सर सिर्फ एजुकेशन पार्ट बताना है ना मतलब नेम वगैरह तो अलाउड नहीं होता। यहाँ बता सकते हो आप, वैसे वहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे, वहाँ तो डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। टाइट्रेशन हो गया वगैरह, और आप HPSC, MSc, है ना, वो सारी चीजें पूछेंगे वो, मगर इंट्रो नहीं पूछेंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ बता सकते हैं। Okay, sir. So, my name is Komal. I passed my 10th standard in 2015. Then I completed my 12th in 2017. After that, I pursued chemistry honors from Miranda House and completed it in 2020 with a GP of 9.27, and I achieved the Science Meritorious Award in my class. And during the last year, I also appeared for the IIT JAM examination, in which I secured an All India rank 83. And after that, I completed my master's in 2022. In the second year itself, I qualified the CSIR NET examination, and then I completed my B.Ed from 2022 to 2024. And during the second year itself, I qualified the HTET examination for PGT chemistry. And in 2024, I appeared for the HPSC PGT chemistry subject knowledge test, and I qualified it. Uh, and after that, I started preparing for the assistant professor exam. यस, गुड। अपने अपने स्टेट के बारे में कुछ स्टडी किया है कि नहीं? The state universities करी है। Yes, your district name is Hisar. Yes, what the basic history Yes, of sir. your district? How do you feel about your district? Sir, our district is situated in almost the middle of Haryana, and there are few historical architectures like the Gujri Mahal and the Killa, and there are a lot of educational institutions like the GGU University, which is also situated in Hisar, and uh, it is almost equipped with all the facilities that one requires, like uh, uh, the travel facilities like airport and everything is situated in Hisar, which is the only one in Haryana, I guess. Yes, good. It's sufficient. Next, move on Haryana. Haryana state. Yes, how do you feel about your state? What the basic history of your state? Sir, our state was formed on 1 November and it was, uh, what is it? Uh, it was founded on 1st of November, and our language is Haryani, which sounds a bit rude to others. Uh, but once you stay with people, then you realize it's not actually that rude or arrogant sometimes. And our culture is basically, uh, uh, our dance is our culture and our like food is basically related to the food items like we listen into the songs also just like doodh, dahi and everything which is very organic. It is also known for farming. Uh, a lot of wheat production in the country comes from Haryana. Uh, the Green Revolution that was started also started from Punjab and Haryana only. Uh, they are not very There are not much of historical monuments in Haryana because it was founded very late, uh, but it is very rich in its culture. Yes, good.
Next, what are the major role of Haryana state in our country, India? Haryana provides for the uh, uh, food like wheat and grains to the country. And in Haryana, a lot of sportsmen comes from Haryana. Almost like a major representation of uh, sports comes from Haryana. In the most of the sports person that represent India comes from Haryana, and since it is situated very near to the capital of the country, therefore there is also a lot of job vacancies in the corporate, like in Gurgaon. So it provides service to a lot of people. Yes, good is sufficient. Yes, no problem. You look them, you have to study. Yes. Next, move on laboratory part, titration. Yes, have you completed the laboratory part now? No. Okay, no problem. Next, move on HPSC organization. Sir, the HPSC organization is situated in Panchkula. Uh, it is responsible for conducting the major examinations like the civil services examination, assistant professor examination, and the other examinations related to the scientists and for the higher level posts. And सर यही करता है बस HPSC थी। Presently, who chairman? सर ये नहीं देखा। Alok Kumar Verma, former IAS officer. ओके। Yeah, next move on NEP, National Education Policy 2020. Is what the basic application of NEP, how it is work in our education system. Sir, the national education policy was reformed in 2020. Uh, it was it is based on the 5333 rules. सर ये ना पढ़ा था बट अभी अच्छे से याद नहीं हुआ है NEP 2020 मतलब। Okay, no problem. Next, move on today topic. ओके सर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Yes, today topic is coordination. Yes. यस सर। यस सर। Let me start. सर डेमो देना है। Yes. ओके सर। So in the coordination chemistry, so in the coordination chemistry, we basically study about the coordination compounds. So what are coordination compounds? The compounds in which there is a metal cation that has vacant orbitals and the ligands come with a lone pair of electrons and the ligands donate their lone pair of electrons into the vacant orbital of the metal cation, forming a coordinate covalent bond, and these compounds are known as the coordination compounds. So we may write
the definition of coordinate compounds. Compound formed by the donation of lone pair of electrons from ligand to vacant orbitals of metal cation are known as coordination compounds. Now, how do we represent the structural formula of coordination compounds? So the structural formula it is represented. For example, we have a coordination compound CO NH3 whole 6 3 positive. इस कंपाउंड में जो CO है that is cobalt, it is the central metal cation and the ammonia are connected to this cobalt through the covalent bond by donating a pair of electrons to the cobalt. It is donating its lone pair of electrons. These ammonia are known as the ligands. The cobalt is the metal cation and 3 plus is the charge. And this whole sphere that I have formed around this structure is known as the coordination sphere. The basic definition में तो मतलब same. Yes, both. Coordination chemistry and coordination compound. What the basic difference? सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पूरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिएक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उन सब चीजों को स्टडी करते हैं. एंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. Yes. One complex is name is CONH3 का whole 6 CL3. इसको एक्सप्लेन कीजिए. इस कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? CONH3 CL3, yes. compound. Cobalt is the central metal cation, so we represent it at the center. And it is connected to 6 ammonia ligands.
So we can say the coordination number of cobalt here is 6. 6 ammonia ligands. So this is the basic structure of the compound, and we represent it inside the coordination sphere. And there are 3 chlorine ligands. So sorry, these are not the ligands. These are the primary valences. So we can write it outside the sphere as Cl3. Here अमोनिया जो है वो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, एंड जो क्लोरीन है दीज आर सेटिस्फाइंग दी प्राइमरी वैलेंसीज. जो क्लोरीन है वो आयोनाइजेबल है, यानी अगर हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्लोराइड आयंस अलग निकल जाएंगे एंड इस पूरे स्फीयर पे 3+ चार्ज आ जाएगा. बट जो अमोनिया लिगेंड्स हैं उनको अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो भी वो डिसोसिएट नहीं होंगे. ये पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, मतलब ऐसा का ऐसा रहेगा, बाकी पार्ट से नहीं टूटेगा, लेकिन ये दोनों आपस में टूट जाएंगे. यस. इसके 1 by 1 पॉइंट बताइए. CO क्या है, NH3 क्या है, इसका Cl3 क्या है? NH3 is the ligand. यस. CO is the central metal cation. And visible ion. यस. कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनाइजेशन स्फीयर, तो कॉम्प्लेक्स. This is the coordination. Okay, sir. This is the coordination sphere. Its coordination number is 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो होता है द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कोबाल्ट. यानी कि जो लिगेंड है उसका जो मेटल है, उसका जो एटम है वो कितने एटम मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है. तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो अकेला कोबाल्ट से बॉन्डेड है. तो 6 ऐसे लिगेंड्स है और 6 ऐसे नाइट्रोजन है जो कि कोबाल्ट से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. यस, गुड. या नेक्स्ट मूव ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज वर्नर थ्योरी. क्या, व्हाट द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी? Yes, can you describe the whole Werner theory, how it is work in coordination? वर्नर्स थ्योरी वर्नर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया था. तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे किन काम में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमें वर्नर्स ने दी थी. इसलिए जो सबसे पहले थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं वो है वर्नर्स थ्योरी. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज, वर्नर ने बोला था कि अगर कोई हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है तो उसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एंड द अदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. जैसे कि अगर हम, वर्नर ने एक कंपाउंड लिया था जिसको उसने स्टडी किया था, दैट इज CO Cl3.6NH3. अगर हम इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा CO
NH3 whole 6 Cl3। जो सेकेंड कंपाउंड वर्जन से लिया था दैट इज COCl3.5NH3। जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CONH3 whole 5 Cl and Cl2। The third compound was COCl3.4NH3। CONH3 whole 4 Cl2 and then Cl। ऐसे करके COCl3.3NH3 and the coordination compound will be CONH3 whole 5 and Cl3। तो वर्नर ने क्या किया, ये सारे कंपाउंड्स लिए और इनके स्ट्रक्चर्स बना बना के देखे एंड उसने नोटिस किया कि जो स्ट्रक्चर से सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, वो स्ट्रक्चर था CO NH3 and all the ligands। वर्नर ने 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए थे। एक तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, एक उसने प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बना के देखा था एंड वन वाज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बट जो बाकी के 2 स्ट्रक्चर थे उससे सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो वर्नर ने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर अमंग द 3 एंड ये उसने बाद में सेटिस्फाई भी किया था बाय मेकिंग द by seeing the isomers of these particular compounds। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो उसने बोला कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है तो उसके पास 2 तरह की वैलेंसीज होंगी। एक तो होंगी प्राइमरी वैलेंसीज जो कि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी और एक होगा सेकेंडरी वैलेंसी जो कि इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। अब जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिफाइन करेगी? सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि अमोनिया एंड क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी यूज नहीं होगा। एंड जो दूसरी बात वर्नर ने बोली थी जो अमोनिया है दैट डिफाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनसे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है और जो आयनाइजेबल आयंस हैं उससे हमें चार्ज ऑन द मेटल पता चलता है। अगर जैसे यहाँ पे 3 Cl है तो यानी कि इस पूरे स्फीयर पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस पूरे स्फीयर पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज होगा। तो ये सारी बातें वर्नर ने बताई थी एंड फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम इस पूरे कंपाउंड को AgNO3 में डालेंगे तो क्या होगा? CONH3 whole 6 Cl3। If we add it to silver nitrate, then he noticed we got 3 moles of AgCl from here and from the second compound we got 2 moles of AgCl and from this particular compound we got 1 mole of AgCl। So he concluded that अगर हम इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन में लेते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो इंटैक्ट रहता है, वो बाकी पार्ट्स में नहीं टूटता। CO और अमोनिया कभी अलग नहीं होंगे। तो दीज आर नॉन आयोनाइजेबल अमोनिया एंड द क्लोरीन इज आयोनाइजेबल क्योंकि वो आयोनाइज हो पा रहा है इन द सॉल्यूशन एंड जितने भी आयोनाइजेबल आयंस हैं वो आउटसाइड द स्फीयर प्रेजेंट है एंड उन्हीं से एक बार हमें 3 मिलेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 AgCl, अगर यहाँ पे 1 Cl है तो एक ही Cl बाहर निकल पाएगा, बाकी Cl अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो वो ये वाले जो क्लोराइड्स है, ये वाला क्लोराइड है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये बाहर नहीं आ सकते बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सब बातें वर्नर्स ने अपनी थ्योरी में बताई थी। Yes, good. Next, move on. Next is ligand. Yes, what is ligand? Basic classification of ligand. Ligand को describe कीजिए one by one.
How many type of ligand? What the role of ligand in coordination? How it is work? Describe. तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड ऐसे एंटिटीज होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिससे कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए। तो लिगेंड, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ द स्पीशीज that are capable of donating lone pair of electrons to the central metal atom are known as ligand। लिगेंड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले हम लिगेंड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। लिगेंड कैन बी ईदर मोनोडेंटेट, Yes. तो मोनोडेंटेट लिगेंड वो होते हैं इन विच only one atom of the ligand is directly bonded to the metal atom। अगर लिगेंड का सिर्फ एक ही एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो हम उसे मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसका एग्जांपल है Cl नेगेटिव, NH3, H2O, और हम ले सकते हैं Br माइनस एंड सो ऑन। So these are the ligands that act as monodentate ligands, and the second ligands are bidentate ligands। तो बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जब अगर हमारे पास एक लिगेंड है, उसके पास ऐसे दो एटम हैं जो कि अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन मोर देन वन, और वी शुड बी स्पेसिफिक बाय सेइंग व्हेन टू डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड तो बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल रहेंगे
For example, oxalato. This is an example of a bidentate ligand. बाइडेंटेट लिगेंड भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अगर दोनों डोनर एटम सेम है, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों डोनर एटम्स क्या है, ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन, बट जरूरी नहीं है कि दोनों डोनर एटम हमेशा सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्लाइसिनेटो, both the donor atoms are different, such as NH2, CH2, COO negative. Here there are two different donor atoms. One is oxygen and one is nitrogen. We can form some structures from these particular ligands. First one is CR. So this is how we show the bidentate ligand in a structure. And similarly, we can show this particular ligand. For example, we have CO, oxygen and nitrogen. So here in this case, there are two different donor atoms. One is oxygen and one is nitrogen, and this is known as glycinato, and it is represented by GLY. Similarly, oxalato is represented by OX. So this is the example of bidentate ligands, and similarly we have tridentate, tetradentate ligands. सर वो सब भी करवाने हैं. यस, ये एग्जाम्पल है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ब्रीजिंग, फ्लैक्सिल, तो उनको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा टाइप्स. So the next one is the ambidentate ligand. These are those ligands in which there are two different donor atoms, but एक टाइम पे कोई एक ही एटम जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. दोनों एक साथ में मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, जैसे कि Cn नेगेटिव, Hcn नेगेटिव. ठीक है, ओनली वन एटम कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एट वन टाइम. अगर कार्बन करेगा तो नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, अगर नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं कर पाएगा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. एंड जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, क्योंकि एक ही डोनर एटम एक टाइम पे मेटल से अटैच होता है. द नेक्स्ट वन इज ट्राइडेंटेट. For example, if we have NH2, CH2, NH, we have two CH2 here. This is NH, and again, so this is an example of tridentate ligand because here three donor atoms are present and all the three are nitrogen. Similarly, we can take the example of a tetradentate ligand. NH2, NH,
NH, and next is NH2. So this is the example of tridentate. This is tetradentate, and then we have hexadentate ligand. And the most common example of a hexadentate ligand is EDTA. There are 4 oxygen donor atoms and 2 nitrogen donor atoms in the EDTA hexadentate ligand. सर और भी मतलब Yes. करवाना है. Yes, good. Next, other new topic is isomerase in coordination. What is isomerase? Basic idea. Isomerism is basically when the chemical formula is same but the structural formula is different, we call the structures as isomers, and the phenomenon is known as isomerism. So we can write compound with same molecular formula but different structural formula are known as isomers. Now, some example, isomers are classified as constitutional isomers and the configurational isomers. So, the first one that we have to study is. Yes, first basic question is inorganic isomerase and organic isomerase. What is the basic difference? Okay, sir. So, in inorganic isomerism, there are isomerism based on the structure of the coordination compounds, such as ionization isomerism, linkage isomerism, but it is not there in the organic isomerism. So, in the ionization isomerism, for example, if we have a structure PU, NH3 whole 5, Cl, and Br. Then, if this bromide ion can replace this chloride ion inside the coordination sphere, then it is an example of ionization isomerism. For example, CONH3 whole 5, Br, and outside the coordination sphere is one Cl and one Br. So this is the example of ionization isomerism. Second is linkage isomerism.